Morning to all students. And today I will tell you about the VAS as I have been told you about it once more time, but today I will also want to revise it to develop your knowledge much about that. So VAS means in Hindi language watch. When something is expressed by a subject, a person or any particular thing, that is called subject. And when anything is expressed by the object about which we talk, उस वस्तु के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसे हम पैसिव कहते हैं. दिस इज़ द वे. And there are few rules about it, that firstly, which is very necessary to know for all of you, that firstly we put third form in a passive. When we convert a sentence in passive from active, then we use third form of the verb in passive for making it. And we find the next rule is that when we put a object of a active sentence in a passive, then we use by before that object. By means agent. Agent इसे कहते हैं कि हम अगर कर्ता के किसी एक वाक्य के जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, सब्जेक्ट को अगर लिखते हैं पैसिव में, तो हम उससे पहले जो है बाय एजेंट का यूज़ करते हैं. बट देयर आर फ्यू अदर थिंग्स दैट यू must have to know, that in a passive sentence we also somewhere use other preposition like to. Whenever we find any indefinite pronoun, any subject that belong from indefinite pronoun, then we use to convert that sentence, to add that sentence by the rule. तो हम to का भी प्रयोग करते हैं. अदर थिंग कि ये हमें जानना है कि हम पैसिव करते हैं, तो पैसिव में हमें सिर्फ 3 ही सेंटेंस मिलते हैं जिसके हमें चेंज करना रहता है. वो होता है ऐसे अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव. only 3 types of sentences. There are other kinds of sentences too, but here is no use of other sentences. दूसरे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं. नंबर तो ये है. और जो दूसरी बात है वो ये होती है कि टेंस का चेंज कैसे करते हैं. You have seen, you can see in the picture that in this tense, in passive, when we have to change any sentence in passive, then if the sentence belong from present indefinite tense, then we convert that in present continuous tense. अगर कोई प्रेजेंट इंडिफिनिट से बिलोंग करता है तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बना देते हैं. बट हियर आर सम प्रॉब्लम दैट व्हेन वी फाइंड एनी एक्टिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी, then we do not change the tense, only we add being in the helping verb of that sentence that belongs from the number of object. कि अगर कर्म एक वचन में है या बहुवचन में है तो उसके अनुसार से हम उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, बस हम उसमें बीइंग ऐड कर देते हैं. ऐसा नियम है. सेम लाइक दैट व्हेन वी फाइंड प्रेजेंट परफेक्ट, वी कन्वर्ट दैट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एंड यू नो दैट there is no change of present perfect continuous tense in passive. You can see in pictures. After that, past indefinite, we convert past indefinite tense. If any sentence belong from past indefinite, then we convert that sentence in past continuous tense. And also like that, when we find any sentence in active that belong from past continuous tense, then we change that sentence adding being. After that, we find future. After that, past perfect tense. तो when we find past perfect, we convert that sentence, हम उसे चेंज कर देते हैं. अगर past perfect में है एक्टिव तो हम उसे past perfect continuous में चेंज कर देते हैं. और फिर there is no change of past perfect continuous in passive. Thus there are many rules. After that we find future indefinite, but here is some different from other tenses, present and past, because in past future tense we do not change a sentence that belong from future continuous tense, because we find shall be and will be in those sentences, and when we find be already in the sentence, we cannot able to add being in those sentences, so we cannot change future continuous tense in passive if the active belongs from future continuous tense.
and we convert future indefinite tense in future continuous. But we do not change the tense that belong from future continuous. After that we find future perfect and we convert the future perfect tense in future perfect continuous tense. future perfect रहता है तो हम उसे future perfect में चेंज कर देते हैं, ये भी होता है. उसके बाद कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज भी होती हैं, क्योंकि आपने टेंस में पढ़ा होगा देयर आर मेनी लॉट ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज दैट वी यूज टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस, जिसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, must and many other kinds of modal auxiliaries. So when we find any modal auxiliaries we add be on in those auxiliaries. अगर कोई हमें ऐसी सहकर्मी क्रिया मिलती है जो मुझे किसी की एबिलिटी या किसी की ड्यूटी, अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉडल एक्टिविटी के बारे में अगर डिस्क्राइब करती है, तो हम उस स्थान पे बी का ऐड कर देते हैं, उस मॉडल ऑक्सिलरी में बी ऐड कर देते हैं. वी इफ़ यू फाइंड कैन वी कैन convert that in can be. If you find could, we convert that in could be. May be, might be, like this. And in next page you find that how to change the changes, how to change that sentence that belong from active voice, and we have to convert that sentence in passive voice. Then how we convert that sentence in passive voice? Here are some examples, and I have to say you about that examples. Then in first sentence you find that Ruchi had not taken part in drama. कि रुचि ने नाटक में भाग नहीं लिया. Here we find that the object is a drama, but that word is depend on the activity of subject, so it is not belong from object. It is a type of phrase or class. So thus I want to tell you that when we find any type of class or phrase that belong from object, the object depend on any class or any phrase or any preposition, then we use it on the place of object to convert that sentence. तो हम उसको चेंज करने के लिए it का प्रयोग करते हैं. तो मैंने it से यूज़ किया. उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हमें कोई प्रीपोजिशन मिलता है, जैसे बहुत सारे सेंटेंसेज हैं कि आई गो टू स्कूल, लोग पूछ देते हैं कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इसको आप पैसिव बनाइए, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आई गो टू स्कूल का पैसिव क्या होगा, स्कूल इज़ गॉन बाय मी. तो इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट फैक्ट, बिकॉज स्कूल इज डिपेंड ऑन द प्रीपोजिशन टू. Thus, if we have to convert that sentence, then we can convert that sentence, that is, school is gone to by me. So we put that in preposition before agent, that I say by, तो हम उसके पहले लगाते हैं. In the second sentence, you find that they do not collect frozen pearls. They do not collect frozen pearls. Here we find that that sentence is belong from present indefinite tense. In picture, if you will zoom it, you can find that I could identify those sentences, and also identify. I also instruct that in which tense we have to change those. तो they do not collect frozen pearls, वो बर्फीले मोतियों को एकत्रित नहीं करते हैं. तो अब यहाँ पे हम क्या पाएंगे, क्या एकत्रित नहीं करते हैं, व्हाट दे डज नॉट कलेक्ट, तो वी फाइंड दैट फ्रोजन पर्ल्स. तो दस फ्रोजन पर्ल्स इज ऑब्जेक्ट. हियर इंडिकेटेड फ्रोजन पर्ल्स अंडरलाइन. I underline the words that connected from object. Thus, so when we have to change the sentence in passive voice, so firstly we put up object. When we change a sentence from active to passive, then it is very necessary to know, all of you, that a passive start begins with an object, and here the object is a frozen pulse. The frozen pulse is not a singular number. The frozen pulse, when we convert this tense that belong from present indefinite, when we convert in present continuous, so you find that the frozen pulse plural are not collected by them. कि जो फ्रोजन पल्स थे वो उनके द्वारा एकत्रित नहीं किए गए, क्योंकि जब हम कर्म की प्रमुखता को दर्शाते हैं तो हम वाक्य को जो है कर्मवाच्य में लिखते हैं, और जब हम कर्तव्य कर्ता सब्जेक्ट पर्सन की किसी विविधता को बताते हैं तो हम उसे एक्टिव में लिखते हैं. और यही तरीका है किसी की एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का. आफ्टर दैट यू फाइंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस कि संजना विल कॉल यू. संजना विल कॉल यू. हियर दिस सेंटेंस बिलोंग फ्रॉम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. Sanjana will call you. So now in the change of tense you
have got that कि future continuous, future indefinite change in future continuous. So you will call, Sanjana will call you. So you will be called by Sanjana. This is the method. So like this, here are many examples. And I also want to say you that when we find any type of sentence that belong from imperative sentence, then we can use command or let be to convert that sentence. Thus, it's over for today, and I think you will divine about it properly. That's it. Take care. Bye bye.